Good afternoon everyone. आरती साहू ऑफिशियल गुड आफ्टरनून सर सार नांती मैडम ही अच्छी मु बुझीपार मोर सबू क्लास रे निहाती कहीं ना कहीं जड़े दुई जन छुआ मत सार बोले संबोधन करके डाकिबाटा ही डाकी थे सेटा मो कंपलसरी हो गला मैडम रू सार वर्सन को ट्रांसफर एक्चुअली तुम मैंने गोटे पिक्चर भी मारिबा को पड़ो कि ए सब्जेक्टा जड़े मैडम भी पढ़ाऊँच बोली। गुड आफ्टरनून प्रणाम किसी कथा नहीं सार शुणिले भी मजा लगे किंतु मोर सबू क्लास रे सार शुणी शुणी मोर प्रथम कमेंट थी गुड आफ्टरनून ना गुड इवनिंग सार तो मत भी लगे कि मुझे दिन पढ़े पढ़े चैनल आसिली स्टिल समस्ते कन्फ्यूजन ये सार आना मैडम आसुँच तो समस्ते टे पिला माने सांग मान को शेयर कर दियो जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ जिते जल्दी जॉइन हो आम से जल्दी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा कहीं एमती आम कहीपरानी कि केतेबेले कौन क्वेश्चंस आसूची कि कौन होउची तो जेहेतु एग्जाम रो नोटिफिकेशन गुड़ा आसिलानी यही पोस्ट एते बाहर से पोस्ट एते बाहर मनरे उत्कंठा जी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी से नर्भसनेस बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। लाइफ एंड लाइफ लाइन मैम जूनियर टीचर सिलेबस वाइज पेडागोजी क्यों आणंतु ठीक अच्छे नेक्स्ट निहाती आम भाविबा या विषय बहुत जल्दी ही नहीं आसवा डोंट वरी तो ठीक अच्छे आउ लेट न करके आम आम क्लास स्टार्ट करवा जी भी जॉइन होपर जॉइन होगी निजर भोट टी कमेंट बॉक्स रे फिलअप करेंगे ठीक अच्छे। आज फास्ट क्वेश्चन पिले असेसमेंट्स ओवेन इनटू द लर्निंग प्रोसेस ongoing frequently paced and connected to the class teacher is work that provides feedback to the both student and teacher is called what? Formative assessment, summative assessment, unit test or holistic assessment कौन कहवा पिले? अरे वाह बहुत बढ़िया। Yes, correct option होची option A, that is formative assessment ongoing during the process during the session. The next पिले theory of generalization learning was proposed by whom? Pranam Puja, Edward Thorndike, option B C.H. Jude, option C Steve Ward, option D William James के? Yes, formative correct answer. Theory of generalization learning was proposed by whom? एटा जानिनी मैम ओके तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी C.H. जूड। तो एठी पिला माने थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ने C.H. जूड कौन कहिसंदी कि यार माने हला कंटेक्स्ट ऑफ गोटे कंटेक्स्ट लर्निंग प्रोसेसटा से एक्सप्लेन करिसंदी कि आमे गोटे पर्टिकुलर कंटेक्स्ट एटा हला एइथरे जो लर्निंग प्रोसेसटा अछि एई लर्निंग प्रोसेसटा वी कैन यूटिलाइज इन अनदर कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग इफ आवर एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग आर सिमिलर जदी आम लर्निंग रो एलिमेंट गुडा सिमिलर होची पिले कि आमर कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ाक इक्वाल होची ताले आमे ए कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग रे जो नॉलेजटा एक्वायर करिचे आज ए जनरलाइजेशन आज ए जीस्ट समराइज प्रोसेस आमे सेही आइडिया सेही नॉलेजटा को गोटे न्यू लर्निंग कंटेक्स्ट रे यूटिलाइज करि परिबा। एडवांस हैप्पी रिपब्लिक डे स्टडी एंथुसियाज्म मो सहित मजाक हे गला जे एटा रिपब्लिक डे हबो ना इंडिपेंडेंस डे हबो स्टडी एंथुसियाज्म GAB आमे आउ थे जनवरी 26 मन दबा ओके किसी कथा नहीं वर्षा को जितेटा जनवरी मास आसी पारिबो। तो नेक्स्ट बा इन स्टैटिस्टिक एस शेप्ड लर्निंग कर्व इज कर्व ऑफ व्हाट? इक्वल रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स और मिक्स टाइप रिटर्न्स। गुड इवनिंग शकुंतला। तो
ए जो एस शेप टा को मध्य सिग्मोइड कर्व बोली मध्य कुआ जाए पिले तो बोधे एटा कहीं कहि भी पारिबनी तो आंसर होउची मिक्स टाइप जो रिटर्न्स होउची पिला माने यार करेक्ट आंसर हबो तो एटा काहे कि मिक्स टाइप होउची फास्ट होउची स्लो इनिशियल प्रोसेस स्लो इनिशियल तीनटा जिंस को नै कि मिक्स टाइप रिटर्न्स होउची कर्व सो इनिशियल प्रोसेस कोन ना ड्यू टू एडाप्टेशन देन सेकेंड डी डी जे कहिला से बुझाई पारिबो ना माने मु डी कहिली बोली तमे डी कहूच रैपिड इम्प्रूवमेंट तो एटा जीवो इंक्रीजिंग रिटर्न्स देन थर्ड वन होची प्लेट्यू TAU फेज जाके कंसीडर करूचे डिक्रीजिंग रिटर्न्स तो जो स्टैटिस्टिक रे एस शेप्ड कर्व बा सिग्मॉइड कर्व आमे कहूचे सही एस शेप्ड कर्व बा सिग्मॉइड कर्व टा ए तीनटा जिंस को नै कि रहूची तो ताकू आमे कहि परिबा मिक्स टाइप रिटर्न्स तो मिक्स टाइप रिटर्न्स काहे कि ना इथरे स्लो इनिशियल प्रोसेस रहूची ड्यू टू एडाप्टेशन सेकेंड रे ता सहित रहूची रैपिड इंप्रूवमेंट इंक्रीजिंग रिटर्न्स मध्ये रहूची ता सहित रहूची प्लेट्यू फेज दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड इनिशियल ग्रोथ प्रोसेस एवरीथिंग इंक्लूडेड इन इट सो दैट एस सेट कर्व इज कॉल्ड मिक्स टाइप रिटर्न्स ओके स्लो रैपिड स्लो यस वेरी गुड किछि कथा नहीं जी भी लाइफ एंड लाइफ लाइन कहउछंती एते व्यस्त हबार नाही आमे बहुत जल्दी ही आनिबा एंड तम मानकु प्रायर इन्फॉर्मेशन देई कि ही प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन आनिबा एंड डिस्कशन करबा जूनियर टीचर हो बा ओटीटी रो क्वेश्चन हो ओके नेक्स्ट द ट्रांसफॉर्म ऑफ लर्निंग may take place in three ways identify them positive negative neutral then plus minus 0 now option C positive negative 0 option D additive consecutive and 0 Mahavir very good positive negative 0 yes anyone else मते तो concurrent viewers देखो होचे 15 किंतु आम छुआ मानकर रेस्पॉन्स आछी आलू yes option C is the correct answer positive negative and 0 positive केमिति पिले ना पॉजिटिव सही जगह रे हबो जेते बेले प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स अस टू एक्वायर आवर न्यू लर्निंग प्रोसेस एंड नेगेटिव केमिति ना नेगेटिव है कि प्रीवियस लर्निंग इंटरफियर्स इन आवर प्रेजेंट लर्निंग एंड 0 कोन ना प्रीवियस लर्निंग हैज नो इफेक्ट इन द प्रेजेंट लर्निंग प्रोसेस ओके सो दैट the transform of learning 3 pages रे बिलीव करे पॉजिटिव नेगेटिव 0 आइदर हमको पॉजिटिव इफेक्ट देखा जीवो नहले नेगेटिव इफेक्ट नहले 0 इफेक्ट किछि भी हम प्रीवियस सहित वर्तमान लर्निंग सिस्टम प्रेजेंट करंट सिचुएशन को किछि भी अफेक्ट करबा नाही नेक्स्ट जीवा which of the following is a principle of constructive teaching learning is an active process option B learning is a search for meaning option C learning is always contextual option D all of the above कोटा हबो पिले
जय जगन्नाथ ऑल महाप्रभु क्रिएशन। यस पिला माने ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। माने कौन एटी लर्निंग होची गोटे एक्टिव प्रोसेस कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रा सामग्रिक विकास। यस होलिस्टिक डेवलपमेंट बा सामग्रिक विकास। तो तार माने होची कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे हम जो निजे निजे क्रिएट करिया कोन करिबा लर्निंग को गोटे एक्टिव प्रोसेस केमिति बनेबा चाइल्ड सेंटर्ड केमिति हेई परिबो स्टूडेंट माने निजे निजर नॉलेज को केमिति कंस्ट्रक्ट करिवे सो दैट ऑब्वियसली ये गोटे एक्टिव प्रोसेस। देन सेकंड लर्निंग इज अ सर्च फॉर मीनिंग। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग बिलीव इन मीनिंग मेकिंग लर्निंग बा मीनिंगफुल लर्निंग। ओके तो सही जो मीनिंगफुल लर्निंग टा केमिति हेई परिबो जेतेबेले आमे माने निजे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज रे हमर गोटे नुवा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिबा बा डेवलप करिबा आम ओन इनिशिएटिव रे ही आमे डेवलप करि परिबा। थर्ड आंसर लर्निंग इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल। ऑब्वियसली आमे एबे प्रीवियसली पढिले ट्रांसफॉर्म ऑफ लर्निंग कॉन्टेक्चुअल किंबा जनरलाइजेशन ऑफ लर्निंग जो सीएच जूड ग मतरे सबुथिरे कुआ जाय छि लर्निंग टा कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऊपर आमे पढि थाउ किंतु हमर लर्निंग प्रोसेस टा ट्रांसफर हेई थाए गोटे सिचुएशन नु आ गोटे सिचुएशन को। सो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट द आउटकम ऑफ लर्निंग रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शन ए लर्निंग ए कंसेप्ट, ऑप्शन बी लर्निंग ए रूल और प्रिंसिपल, ऑप्शन सी लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। कोटा हम पिले सी लिजा कहलेनी। Anyone else? Lippy all. Okay. महाप्रभु क्रिएशन जी भी तुम्हें जब तमें चाहूच तमें क्वेश्चन आंसर पार्टिसिपेट कर। एटी जय जगन्नाथ ऑल कहले का पाखे फ्री टाइम ना कहीं जय जगन्नाथ ऑल रे रिप्लाई देबे नहीं। ऑलरेडी तुम्हें 2 टाइम्स कि 3 टाइम्स लिखि सारे किंतु क्वेश्चन आंसर गोटे दौना। यस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो लर्निंग ए कांसेप्ट रे कौन है जिवो कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटी ये गोटे कांसेप्ट सुनिल तो ए कांसेप्ट रू आउटकम बाहर थिला। ऑब्वियसली लर्निंग ए रूल और प्रिंसिपल लॉज ऑफ थॉर्नडाइक ये गोटे रूल एंड प्रिंसिपल तो तांकर जो लॉज थिला सेटा हमर गोटे लर्निंग आउटकम रू ही आसीची। तापर हैला लैंग्वेज लर्निंग आमे ओडिया कहू इंग्लिश कहू एनी लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज आम लर्न करुचे किसी भी लर्न करुचे तार निहाती से लर्निंग आउटपुट अच्छी कौन कॉम्पिटेंसी इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज सो दैट द आउटकम ऑफ लर्निंग रिलेटेड टू ऑल ऑफ द एबव। ओके नेक्स्ट मैम setting goals and deciding strategies teaching occurs in which phase of teaching pre-active phase exit phase interactive phase ना post active phase कोटा हवा पिले setting goals and deciding strategies comes under which phase of teaching लीजा कहलेनी सी अमन कहलेनी ए लिपि ए ओके एनीवन एल्स समस्त टिके आंसर दबा पई ट्राई करो पिले। यस लिपि वेरी गुड। ऑप्शन ए प्री एक्टिव पिले देखो एटी देछि सेटिंग गोल्स मो कलम मते मानुनी सही भलिया एंड डिसाइडिंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग ऑकर्स इन ह्यूज फेजेस ऑफ टीचिंग माने कौन कि आमे जो छुआ मानन को पढ़ौचे पढ़ेबा को जिबा आगरु आमर जो आमे कहूचे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो आमर लॉन्ग टर्म गोल हो आमर एज ए टीचर शॉर्ट टर्म गोल हो आमको ए टॉपिक टा पई कोन अचीव करियर अछि एंड को मेथड को स्ट्रेटजी कोन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मते यूज करियर अछि सो दैट ए पर्टिकुलर क्लास रे ए पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आंसर राउंड भी चली छि मते सेति की प्रिपेयर हवा दरकार गोटे गोल फिक्स करिया दरकार मोर आजिरा लर्निंग आउटकम टा मो क्लास रे कोन
कौन हम एंड कौ स्ट्राटेजी पढ़े पारे मो छुआ मान बेसी इफेक्टिव हो पार दैन मोर प्रीवियस क्लास आउ से माने एंजॉय करि परिबे। तो यहाँ कौन हुए मु आसवा आगु ही भाविकी आसे कि मते आज क्लास रे कौन करिवार अछि कौन एग्जांपल अछि। ओके सब बेले तो एमती माने न थाए जे मु पूरा महान पंडित एंड मु आसिली मु सब एग्जांपल गुडा एमती ठिया हेली भाबी देली आ मो माइंड रे एग्जांपल आसी गला। तो आमे निहाती आसीबा पूर्व फ्री एक्टिव फेज रे ही गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फिक्स करके आसी थाउ एंड सेटा को केमिति एग्जीक्यूट करबो केते बेले को एग्जांपल लेबो कौन करबो सेटा डिफर करे किंतु कौन कौन एक्चुअली करबा सेटा हमें ऑलरेडी फ्री एक्टिव फेज रे फिक्स करि थाउ। क्लियर। नेक्स्ट जिबा Henderson, Bidley, Horman and others are associated with what? English models of teaching, na science models of teaching, na mathematical models of teaching, na language teaching. कोउटा पिले anyone else? लिपि मध्य सी देलेनी कमला मैडम सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर पिले मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ओके वेरी गुड लिपि एंड कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ STI पॉलिसी 2013 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन the age group of 6 to 14 years, then to provide funds for basic education, to promote business schools, to attract talented and bright minds towards career in science, research and innovation. कोटा हवा पिले डी किए लिखिले लिपि वेरी गुड। एनीवन एल्स आउ का को कोन किछि जणा नाही सी गोटे छुआ ही सब क्वेश्चन आंसर दउछंती एंड तमे माने जो कंकरेंट व्यूअर्स अच्छा माने कोन कि लिंक टा को क्लिक करछो यस आज कोन ओडे पेडागोजी रा पार्ट 3 रा मैराथन हबार अछि जिबा टिके अटेंडेंस पके दे के आसीबा पिले टीचर रो किछि दया होनी मु तुमको एवरी क्लास रे कहिछि बी सीरियस बी कॉन्शियस एग्जाम तुमरो प्रिपरेशन तुमरो बुझला ना एठी जे ठिया हेछि से आलू सारू बैगण जहाँ भी पढ़ेब से सोईकी पढ़ेले भी से ता दरमा पाइब से जेमिति पढ़ेले भी दरमा पाइब किंतु से टीचर को केते तमे एनर्जाइज करि पारिब तमे केते घुरे तुरे के क्वेश्चन पचारि पारिब तमे से टीचर ठू केते अधिक नॉलेज एक्वायर करि पारिब केते रु केते दूर बेसी जानि पारिब सेटा डिपेंड अपन ओनली यू। तो तम मानक हाथ रे ही से जिनसडा अछि किंतु तम माने ना बेले बेले एमती हुए जानच आमे जोटा को इजी पाठ भाबू सेटारे जदी गोटे सिंगल बीट भी हमर भूल हे गला हमको हम प्राण छाड़ी गला बड़े एग्जाम रे लागे। मु बार बार एग्जांपल टा देइची जदी मु भी सेति तम भलिया कॉन्शियस सेई थांती ताले आज मु एठी न थानी मु भी से टीचिंग प्रोफेशन मु भी बीएड करिची मु भी एमएड करिची मु सब किछि करिची डिग्री हायर फर्स्ट क्लास धरि कि मु बुलुची सबु किछि क्वालिफिकेशन अछि किंतु सेई गोटे मिस्टेक पाई ही एठी मु ठिया हेची। तो तमे माने भाबनी सबु जिंसडा सिली एते मजाक जिंस आमे इजीली करि परिबा। ओके ठीक अछि किछु कथा नहीं। तो यस ऑप्शन डी हबा करेक्ट आंसर पिले टू अट्रैक्ट टैलेंटेड एंड ब्राइट माइंड्स टुवर्ड्स कैरियर इन साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन। तो तार STI रो फुल फॉर्म होची साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तम ना तो मु जानी सॉरी कहबा नॉट मैटर बट मु छुआ को देखुची कि तमरा पढ़ा होनी तमरा प्रोवाइड करा होनी तमे एटा करी जानी न तमे
मे भी क्या मो कथा हट हो पारे किंतु आपण माने बहुत कथा कहउछंती एंड यस आमे जो परदा पछर रही कि आमे भी कमेंट गुडा को पढुचु देखुचु जानूचु आपण माने आस्ते के थरे घुरे तुरे के से टीचर को क्वेश्चन पचारंतु से सेति के आपण को सब्जेक्ट नॉलेज देई पारुछ कि नहीं आपण माने थरे एन्जॉय करी क्लास को देखंतु आमे चाहिले जनक मुंडरे हजार कंप्लेन देई परिबा जदि जणे हमको गोटे सुजोग दउची ताले आमे सेई सुजोगटा को यूटिलाइज करी देखिबा दरकार हजार कंप्लेन ने कौनसी मतलब न थाए नेक्स्ट व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कोडा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ने रिलेटेड न थाए टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग ऑप्शन बी टीचर टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड ऑप्शन सी द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग ऑप्शन डी लर्निंग इज बेस्ड ऑन चाइल्ड एक्सपीरियंस कोडा हबा पिले A D A B B B yes ऑप्शन बी करेक्ट आंसर पिले व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टीचर जो क्वेश्चन आंसर मेथड रे पढ़ांती टीचर का मेथड ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी सेटा कोनसी हमर कम नॉट कम्स अंडर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड सो दैट एटा चाइल्ड सेंटर्ड रे जीवनी आउ बाकी एक्सेप्ट जो तीनटा का रहिला सब गुडा का चाइल्ड सेंटर्ड मेथड अंडर रे जीव नेक्स्ट जीवा कि which one of the following is not related to child centered teaching and learning emphasis on learning experience now option B emphasis on holistic development option C emphasis on self learning option D emphasis on classroom teaching कोडा हबा बिले लीजा कहलेडी C ओके कमला डी लोहिताक्ष मेहर बहुत बढ़िया नाटे लिपि कहले सेल्फ लर्निंग महाप्रभु अरे तुम नाटा ही जय जगन्नाथ ना तुम सबुथ जय जगन्नाथ लेखिकी दौच योगेश प्रधान सी पिला माने सी हब नहीं ऑप्शन डी हब कि एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग पचारे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग तो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग कोटा रिलेटेड नुह ऑप्शन ए रहा एम्फासिस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस आमर प्रीवियस एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग फोकस करे दे जोटा कि कम्स अंडर आमर कौन ना चाइल्ड सेंटर लर्निंग तो ऑप्शन ए हम ऑप्शन बी एम्फासिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट फिजिकल हो कि इमोशनल हो कि क्रिटिकल थिंकिंग हो डिसीजन मेकिंग हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जहाँ भी लाइफ स्किल हो कि किसी भी इमोशनल अफेक्शनेट जहाँ भी जो जो स्किल अच्छी सब प्रकार होलिस्टिक डेवलपमेंट करिकुलर सहित को करिकुलर एम रखी थाए चाइल्ड सेंटर्ड मेथड तो सेटा भी हबो देन एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग ऑब्वियसली सेल्फ लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग ऑल सर कम अंडर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड तम मानकू तुमरा निजर सेल्फ पेस ऑफ लर्निंग बा सेल्फ टाइम प्रोवाइड करा जिवो तुमे निजे निजर लर्निंग प्रोसेस टा को कंस्ट्रक्ट करिवो ओके किंतु एठी अछि एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग तो क्लासरूम टीचिंग आसिला माने टीचर तो टीचर आसिला माने चाइल्ड सेंटर रे टीचर रा नाम पा किछि नाही से एक्ट करंती एज ए फैसिलिटेटर ओनली ओके सो दैट ऑप्शन डी होछि करेक्ट आंसर मैम तांका हाइड रे भी जय जगन अरे मु से कंफ्यूजन होछि सेते बेल ठू कि जो माने जय जगन्नाथ मु कहछि कोन सब कथा रे जय जगन्नाथ सी ताले मते आंसर टा ऑल दउथले किंतु मते लागुतला कि जय जगन्नाथ ऑल एमती एडे बड़ नाटे अछि मु केमती जानिबि से जय जगन्नाथ हाथ टेकी कहछन कि तंगा आइडर ना अछि ठीक अछि नेक्स्ट बा व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग इज ट्रेडिशनल को अप्रोच ऑफ लर्निंग टा ट्रेडिशनल टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक लर्निंग सेंट्रिक नन ऑफ दिस कोटा पिला माने
रीतांजलि ठीक अच्छे रीतांजलि ए यस ऑब्वियसली टीचर सेंट्रिक मेथड जोड़ा कि लेक्चर मेथड बा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ओनली डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन पळे आसीबो चाइल्ड सेंटर रे तो सेही गुडा का टीचर सेंट्रिक रो क्वेश्चन आंसर मेथड हो सब होची ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ओके वेरी गुड नेक्स्ट बा in which approach of learning process the learner learn independently को approach learning process रे गोटे learner independently स्वतः प्रभुत्व भाव रे निजे लर्न करि पारे ऑप्शन ए टीचर सेंट्रिक ऑप्शन बी लर्नर सेंट्रिक ऑप्शन सी लर्निंग सेंट्रिक डी ऑल ऑफ दिस कोटा बिले वेरी गुड लीजा शुभ्रज्योति ओके यस ऑप्शन बी लर्नर सेंट्रिक होची करेक्ट आंसर पिले अमन सी नुआ बी हवा ऑप्शन बी लर्नर सेंट्रिक काहेकि ना पचारि इन व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रोसेस द लर्नर लर्न इंडिपेंडेंटली तो जोटा रहिला हमर लर्नर सेंटर चाइल्ड सेंटर सेइथरे कोन हेइ थाए गुटे चाइल्ड बाय इंडिविजुअल लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज इंडिविजुअली बट दे कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज विथ देयर पास्ट एक्सपीरियंस बाय प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस ओके नेक्स्ट बा 3H coordination means coordination among what hand head and heart hand hair head both A and B or all of the above 3H means what अमने लीजा ए ओके वेरी गुड तृप्तिमयी बाघेल ए वेरी गुड तो यस हैंड हेड एंड हार्ट होची राइट आंसर जोड़ा के 3H को इंडिकेट करूची यस लिपि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ टीचर सेंट्रिक अप्रोच टीचर और टॉट और सी TLM और डी एनवायरनमेंट कोटा पिला माने टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे डी TLM लिपि लिखिले ओके तृप्तिमयी ए लिखिले प्रियंका सी पिला माने एठी गोटे जिनस बुझी रखा सी पचार टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे किए इंपोर्टेंट तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए टीचर जदि मु तम मानक पढौची आ एठी मु नाही तले TLM टा किए देखैबो लीजा सी हबो नाही TLM हबो नाही TLM टा तुमको किए शो अप करबो टीचर तो मेन इंपोर्टेंट एलिमेंट होची टीचर जदि टीचर सेंट्रिक मेथड रे टीचर ही नाही सी तो नाही आ तुमको TLM किए देखैबो तुमको क्वेश्चन आंसर किए पचारिबो तुमको लेक्चर मेथड रे किए पढेबो ओके नेक्स्ट बा Which of the following is not a merit of learning centric approach of learning? Learning centric रा कोटा merit नुहा. Good afternoon Soumyaranjan. Option A, learners find interest in learning. Okay. Then it fosters in learners a sense of cooperation. C, student mostly depend on teacher. D, emotional problems of learners are probably channelized. कोटा हवा पिले? तृप्तिमयी लीजा वेरी गुड ऑप्शन सी स्टूडेंट मोस्टली डिपेंड ऑन टीचर लर्निंग सेटिंग रे बोथ आर इंडिपेंडेंट तो सेतिकी लर्निंग फ्रेंडली जोड़ा स्टूडेंट मानू को सेतिकी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बा लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाई थाए ओके नेक्स्ट बा वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ टीचिंग मेथड्स आइडेंटिफाई कोटा टीचिंग मेथड कैटेगरी रे आसु नाही टीचर सेंटर्ड मेथड लर्नर सेंटर्ड मेथड पेरेंट सेंटर्ड मेथड कंटेंट फोकस्ड मेथड कोटा पिले कोटा गोटे मेथड ऑफ टीचिंग अंडर रे आसु नाही वेरी वेरी इजी पूरा अमन मर्डर कर देले केक कटिंग हे गला तारा क्रॉस ओके ऑप्शन सी पेरेंट सेंटर्ड मेथड नेक्स्ट बा The use of TLM is not associated with what? To make teaching learning pleasurable. Option B,
to cover the course content in time. Option C, to create motivation for learning. Option D, to teach concrete concept. कोड हबा पिले very good. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पिले से देइछि कि टीएलएम यूज करले नॉट एसोसिएट विथ टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लेजरेबल गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आनंददायक बा प्लेजरेबल करिबारे टीएलएम टा मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका ग्रहण करता है यस सही पॉइंट टा निहाती भाबरे करेक्ट देन टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर लर्निंग ऑब्वियसली टीएलएम आमे देख मु एमती पढ़ाई देबी कौन करबी मु एटा देखेबिनी किछि नाही मु बसिबी एंड तुमको गोटे यूट्यूब सेशन लाइव आनिबी मु केवल लेक्चर फोफाड़बी तमे किछि देखु नथुबो मु तुमको कहि जाउथबी एंड तमे आंसर दउथबो सेडरे तमरो मोटिवेशन भी रहिबो नाही देन आसले टू टीच कंक्रीट कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली कंक्रीट कॉन्सेप्ट पढ़ाइबा द्वारा ही छुआ माने बेसी मोटिवेट हेइथांदी रादर देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आमे एटलीस्ट ठीक अछि आमे से जगह को नहीं पारिबानी किंतु छुआ को फोटोज वीडियोस देखाई पारिबा आजिकली 3D पिक्चर्स बाहर आनी वीडियोस बाहर आनी जहा द्वारा आमे एठी बसी कि मध्य आमे अन्य जगह सब जिंस इजीली देखि पारुछे सो टीएलएम द्वारा सेटा पॉसिबल किंतु टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम जदि आमे टीएलएम देखाई पढ़ाइबा कोर्स कंटेंट इन टाइम सरीबो बोली आमे सेटा कहि पारिबा नाही सो नॉट एसोसिएट अछि बोली ऑप्शन बी करेक्ट हैला ओके नेक्स्ट व्हेन डिड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट इन आवर स्टेट ओडिशा तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन केबे स्टार्ट हैला 2005 और 6 2006 7 2007 एंड 8 2008 एंड 9 लीजा कहलेनी सी एमडी अख्तर सी प्रियंका ऑफिशियल सी जदि एते जनकर सी आसिलेनी आ टीचर एठी कुआडे जिबार बाट नाही यस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 2007 एंड 18 ईयर रे हमर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ओडिसा रे इंट्रोड्यूस हेइथिला बा आसीथिला ओके नेक्स्ट जिबा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्रिंट रिसोर्सेस कोटा प्रिंट रिसोर्सेस अंडर रे आसीबा मॉडल और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स चार्ट्स और नॉन ऑफ दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्रिंट रिसोर्सेस तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी चार्ट्स रे कोन चार्ट्स तो चार्ट्स रहिले तुमे निजे सेइतरे पिक्चर बनेबा बट आर राइट आंसर होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ना सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो गुडा का रहूची सेई गुडा का प्रिंटेड रिसोर्सेस सेई पारिबा प्रिंट रिसोर्सेस ओके चार्ट्स सब नाही लिजा वेराइटी ऑफ एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर व्हाट ग्रुप लर्निंग स्मॉल ग्रुप लर्निंग इंडिपेंडेंट लर्निंग ना ऑल ऑफ दिस वेराइटी ऑफ लर्निंग काहे कि सॉरी वेराइटी ऑफ एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस ग्रुप लर्निंग ना फॉर स्मॉल ग्रुप लर्निंग ना इंडिपेंडेंट लर्निंग ना ऑल ऑफ द अबव okay so all of the above correct answer about variety of activities used for all of the above activities okay next कि in order to meet the diversity there is need of what inclusive curriculum blended curriculum special curriculum none of the above
inclusive curriculum, very good. Yes, inclusive curriculum under हमें कही include all the people irrespective of their barriers, जमती disability हो, caste हो, creed हो, color हो, कौन सी भी barrier ना है कि समस्त को include करिबा। कौन है गला लाइफ एंड लाइफ लाइन जे पूरा ओहो एमती का रिएक्शन गोटे आसला हुआ है। नेक्स्ट, क्लासरूम असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट? ऑप्शन ए द सम टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन डिफरेंट टेस्ट्स, ओके। ऑप्शन बी द शेड्यूल एंड एग्जाम्स एज पर द बोर्ड। ऑप्शन सी द इनफॉर्मल टेस्टिंग डन बाय द टीचर। ऑप्शन डी द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजन अबाउट लर्निंग। डी यस, ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर पिला माने। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजन अबाउट लर्निंग क्लासरूम असेसमेंट सेटा। एंड यस जोटा पचारुला सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स ता काहे की प्रिंटेड रिसोर्सेस वाई के पचारथिले, अमन बदे पचारथिले। यस इट इज सेल्फ जोड़ा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स पिले रहिला। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स डज नॉट मीन कि मु एज ए टीचर इंस्ट्रक्शन जोड़ा दउची ना। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बोली गोटे ट्रेडिशनल टीचिंग मटेरियल्स अछि जोटा कि अटे टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल्स माने कोन जोड़ा हम टेक्स्ट रे तमे देखिथिबा मटेरियल्स माने रिसोर्सेस माने कोन कि जोड़े पिक्चर ऐड हे कि थाए। धरो हमें कहिबा कवि होउछंती एई कवितार कवि हे तमे देखिथिबा 9th एंड 10th बेले तमर जो कविंग विषय सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया जाई थाए। तो सही सेल्फ इंट्रोडक्शन समय रे कौन करा जाई थाए कि तमर सेठी तांगर गोटे छोट पिक्चर दिया जाई थाए जोटा कि गोटे टीचर निजे आसिकी सेटा न आंकिले मध्य बिना टीचर रे छुआ माने प्रिंटेड मटेरियल को आनिकी निजे निजे सही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को देखिकी सेहितरु इंस्ट्रक्शन पाइकी निजे बुझी परिबे एंड जानी परिबे। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड इट कम्स अंडर प्रिंटेड रिसोर्सेस एंड चार्ट्स जोटा रहउची आमे निजे चार्ट्स बनै परिबा किबा सेटा प्रिंटेड हेई परिबो। तो ये बोथ हो जबार ये चार्ट्स हम ना प्रिंटेड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स रे आसीबो सेटा। ओके नेक्स्ट जीवा कि असेसमेंट यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल टेस्ट एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ ए लेसन आर नोन एज व्हाट? समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और इस्पेक्टिव असेसमेंट। कोड हबो बिले? यस ऑब्वियसली formative assessment. Next, formative assessment is otherwise known as what? Assessment of learning, assessment for learning, assessment in learning or assessment as learning. Yes, assessment for learning. Next, summative evaluation is done at the end of the year, beginning of the year, during the year, at any time. Summative assessment केबे डन करा जाई थाए बा वर्केबल हेई थाए बा केबे कंडक्ट करा जाए? Yes, end of the year. Next, formative evaluation gives information about what? Learning progress of student, learning improvement of teacher, both A and B, none of the above. कोटा अब बिले formative evaluation gives information about what? Yes, very good. ऑप्शन ए एठी अब सी हब नहीं एठी टीचिंग इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर थांदा लर्निंग इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचर नॉट कम्स अंडर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके तृप्तिमय सी हब नाही एठी ए हब लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचिंग इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर लर्निंग इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर नुहा। ओके नेक्स्ट जीवा कि co-scholastic areas refers to what? Affective domain, psychomotor domain, both A and B or none of the above. कोड हबो बिले co-scholastic areas refers to what? Yes, both A and B,
that is comes under affective domain and psychomotor domain. मालो से आखि सुखाई दे देले एमती मन दुख करनी मो मन दुख भी हो. The main aim of COE is to evaluate what? Only scholastic areas, then only co-scholastic areas, both A and B, none of the above. पिला माने एटा COE नुह CC कौन हम? Yes, both A and B. Next जीवा. The main purpose of AFL but assessment for learning tax is to provide feedback to students, teachers, both teachers and students, none of the above. Assessment for learning रा main aim कौन? Feedback कहाँ को देबा? Teacher को ना students को ना both teacher and student को ना कहाँ को भी नुहे. लीजा C, कमला C, okay. Yes, option C, both teachers and student को assessment for learning बा formative assessment through रे feedback मिली थाए. Okay. Next जीबा. Assessment as learning gives importance to learning goals rather than performance goals. It is true or false or cannot say or none of the above. लोहिताक्ष मेहर तमर विद्याकर एकेडमिक्स रे पेडागोजी क्लास रो सबु किछि प्लेलिस्ट अछि. तमे चेक करिवो जाई कि प्लेलिस्ट को विद्याकर एकेडमिक्स को जीवो एंड प्लेलिस्ट चेक करिवो. प्लेलिस्ट रे पेडागोजी रो सबु किछि जहाँ भी लाइव क्लासेस अछि सबुरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन अपलोड अछि प्लेलिस्ट रे. थरे चेक करके देखिबो. मु तो देखिछि सबु किछि अवेलेबल अछि जहाँ भी क्लासेस आगुरु हेइछि बा एबे भी जोडा होउछि क्लास सरला पर अपलोड हेइ जाउछि. Yes, option A, that is true. कहीं ना assessment as learning ता होउछि formative assessment, so that it gives importance to learning goals rather than performance goal. माने हमर learning केमिति develop हबो, केमिति better हेइ परिबो, से सब जिंस ऊपर से फोकस करे ना कि हमर outcome कोन हबो. Okay. Next, the degree to which an assessment actually measures what it is supposed to measure known as what? Validity, reliability, practicability बा ethics कोटा. Yes, Lija, assessment as learning sometimes comes under formative assessment. कहीं ना सही जेते बड़े तुमको assessment as learning न दे कि broad version formative assessment दे थाए सेठी तुमको formative assessment ही choose करिवार अछि. Yes, option A, validity is the correct answer. आमे जहाँ मेजर करिया को चाहूचु से ये जदि मेजर करूचे ताहले सेटा validity. In which of the following subject is mentioned? Informal letter, formal letter, both formal and informal, personal letter. पिले एटा तमरा मते लागुची इंग्लिश क्वेश्चन ने ऐड हे गला भलिया. डेई जिबा. Yes, लेजा सेल्फ टिके सही क्वेश्चन ना तुम इंग्लिश क्वेश्चन आई थिंक पेडागोजी क्वेश्चन नुह. यस कि असेसमेंट आज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट तार अन्य नाम किंतु गोटे जिनस होची. यस लिपि फॉर्मल करेक्ट आंसर हबो कि तमर तार जिनसटा होची कि सेटा कम्स अंडर कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट. ड्यूरिंग जेते बेले हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट कहरुचे तार गोटे पार्ट ऑफ असेसमेंट होची असेसमेंट एज लर्निंग जोथरे कि सेल्फ असेसमेंट एंड प्योर असेसमेंट बोथ इंक्लूडेड. तो तमे तमर माने जहाँ भी लर्निंग प्रोसेस अछि ताकू निजे फीडबैक दबो किंबा तमर छुआ माने फीडबैक माने तम सांग छुआ माने जो माने फीडबैक देबे सेटा तमर समेटिव असेसमेंट रे एड ऑन हेकी तमर आउटपुटटा आसीबो तमर आउटकम. सो जेते बेले एमिति परीक्षा रे बहुत टाइम हुए तमरा समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑप्शन ने देई थाए असेसमेंट एज लर्निंग देई न थाए सेठी हमकु कंसीडर करिया को पड़े ए असेसमेंट एज लर्निंग कम्स अंडर फॉर्मेटिव असेसमेंट. किंतु जदि हमकु बोथ एज लर्निंग एंड फॉर लर्निंग देई छि तो सेठी हम एज लर्निंग को चूज करबा. तो एटा जानि थाओ. ओके नेक्स्ट बा कि व्हिच टेक्निक इज यूजफुल फॉर जनरेटिंग आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वेश्चनिंग, वाईईसी डिस्कशन और रेफरेंस. कोटा आइडियाज जनरेट करिबा पाई बेस्ट टेक्निक यूजफुल टेक्निक कोटा बिले. यस वेरी गुड. ब्रेनस्टॉर्मिंग जेते ब्रेनस्टॉर्मिंग करिवो जेते एनालिसिस करिवो जेते क्रिटिकल थिंकिंग करिवो सेते तमर आइडियाज न्यू न्यू जनरेट हबो.
व्हिच इज द मेजर स्किल डेवलपमेंट इन एसे राइटिंग कोटा गोटे एसे राइटिंग रे तमरा मेजर स्किल डेवलप होई थाए ऑप्शन ए आइडिया जनरेशन ऑप्शन बी सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज सी रिवाइजिंग डी ड्राफ्टिंग कोटा पिले प्रीवियस क्वेश्चन ना आंसर हो जिबा ऑप्शन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग लिपि ए तृप्तिमय बेगले एसे राइटिंग रे तमरा केवल आइडिया जनरेशन हुए मेजर स्किल कोटा हुए सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज आइडिया जनरेशन जदि आमे ब्रेनस्टॉर्मिंग कले ओनली डिस्कशन कले सेथिरे मध्ये हमर आइडिया जनरेशन हे जाय पिले आमे जदि डिस्कशन करूचे भी हमर आइडिया जनरेशन हे जाय किंतु एसे राइटिंग रे जो मेजर स्किल ता होचे सेटा सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज तमे एसे राइटिंग लिखुछो कि ता घरटा एठी थिला तापर सी आसिला पुणी पळेला पुणी आसिला ना आमे जहाँ भी लिखुचे सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप एसे राइटिंग रे लिखुचे फास्ट गोटे पैराग्राफ नेक्स्ट आउ गोटे पैराग्राफ एंड ईच पैराग्राफ रो इंटरलिंक थिबो आउ गोटे पैराग्राफ सहित कि मोर फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ हैला तार इंटरलिंक सेकंड पैराग्राफ सहित जेमिति कि जने राइटर जेमिति लेखुची राइटर रो जहाँ फीलिंग्स इमोशन अछि सेटा जे खाता चेकिंग करूची से जिनसटा जे रीडर सी बुझी परिबा दरकार तार हार्ट को टच कर परथवा दरकार तो सीक्वेंसिंग द आइडियाज इज द मेजर स्किल इन एसे राइटिंग ओके नेक्स्ट मैम Which of the following step is more linked to learner's construction of knowledge? कोटा engage, elaboration, exploration ना explanation. Which of the following step is more linked to learner's construction of knowledge? पिला माने लर्नर गोटे निजर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंगेज रे करि परिबो ना एक्सप्लोरेशन ने राइट आंसर होची एक्सप्लोरेशन ऑप्शन सी एंगेज माने कोन एंगेज स्टेप रे कोन हुए आज ए टीचर जते बेले मु क्लासरूम को आसुची तो आज आमे कोन करिबा कोन नाही को टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिबा को टॉपिक ऊपर पढिबा से टॉपिक ता कोन लर्नर सेंट्रिक माने गोटे जीस जोटा माने मु एमिति तुमको एग्जांपल ले बुझेबी सो दैट आमे जोडा लेसन प्लानिंग धरि के क्लासरूम को साधारण तो जाई थाउ आमे एमिति कहिबा कि क्वेश्चन आंसर पचारिबा सेइथरे पिला माने निजे टॉपिक को आसीबे बा एंगेज हेबे एटा होची एंगेज फेज रो जिंस जोथरे कि आमे डिस्कशन करबा ओके किंतु ना कि एंगेज फेज रे सही ही आमे आसीबा कोन आमे केवल क्वेश्चन पचारिबा किबा किछ गोटे एग्जांपल कहबा किछ गोटे वीडियोस देखेले तो जो कोनोसी भी टॉपिक हो ता पई डिफरेंट टेक्निक अछि को टॉपिक रे तमे वीडियोस देखेबा को टॉपिक रे आमे चार्ट देखेबा को टॉपिक रे ग्राफ्स देखेबा को टॉपिक रे किछि मॉडल देखेबा तो किछि भी थ्रो क्वेश्चनिंग आमे तांको पचारि के टॉपिक को आनेबा माने पिला जो एमती यार साइड हे बसथिबे के कोठी गाउ खुंपुथबो कार माइंड डिस्टर्ब थिबो के कोन भाबुथबो तो से टॉपिक को आनिबा फेस्ट होची एंगेज नाइ के पिला माने कंस्ट्रक्शन नॉलेज करि थांदी सेही समय रे गोटे छुआर किछि भूमिका न थाए एंगेज फेज रे गोटे टीचर मेन इंपोर्टेंट भूमिका कि टीचिंग ता को एन्जॉयबल करिवा पई से छुआ मानको केमिति एंगेज करई पारुची सेकंड होची कि तमरो एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेनेशन कौन ना एक्सप्लेनेशन सेकंड फेज होची तमरे एक्सप्लोरेशन टा पिले एक्सप्लेनेशन को जीबा आगो एक्सप्लोरेशन टा देखि दबा तो एक्सप्लोरेशन जो तमरे सेकंड फेज एक्सप्लोरेशन ने कौन काहे की हेई थिला न हेई थिले कौन हेई थाता तमे कौन भाबुछ जदि तमे गोटे ग्रेविटेशन पढुछ कि किछि भी गोटे पढुछ लॉ ऑफ मोशन किछि भी पढुछ न्यूटन को लॉ धर आमे नबा एग्जांपल साइंस छुआंग पई तो तमे सेठी पचारि पारिबो कि ठीक अछि जदि आज आमे न्यूटन को लॉ पढिबा तमे तो समझ जानिछ सेउटा ऊपरु तळ को पड़ी गला सी ग्रेविटेशन थ्योरी कि किछि किछि अगडा बगडा माध्याकर्षण बल बाहर करि देले ताहाले जदि एटा हेई न थांता आज कोन हेई थांता पिला भाबिबे तो सेठी से कोन भाबी थिबे ताले न्यूटन को लॉ माने कोन हेई थिबो तमे कुह तमे फास्ट गप्पडा कहि दे कि तो पिला माने कहि देले एटा न्यूटन को लॉ तापर तमे पचारि के तांको टॉपिक को आनिला जदि तमे के सोशल साइंस छुआ आमे सेठी पचारि परिबा कि पिला माने अशोक काहे कि चंडाशोक रु धर्माशोक को आसीथिले सी जदि चंडाशोक रु धर्माशोक काहे कि आसीथिले आसीबार रीजन कोन थिला सी आसीला पर कोन हेइथिबो बोली तमे भाबुछ
जदि सी आसी न थांते ताले तमे कौन भाबुछ सही समय रे सी जदि चंडाशोक हिमदी हेकि थांते खाली हिंस्र काम करि थांते हणा मरा रक्त बुआ काम करि थांते धर्माशोक रे परिणत हेई न थांते कोन हेई थांते तमे भाबुछ तो पिला सेठी तांकर ब्रेनस्टॉर्मिंग हैला से विभिन्न प्रकार कथा पांचटा पिला थिले पांच प्रकार आंसर देबे सी भाबिबे एक्सप्लोर करबा को ट्राई करबे निज मन भितरे ए जिंसटा हेई नथिले कोन हेई थांदा ए जिंसटा जदि हेईची कोन होउची तो सी तांकर स्टेटमेंट तुमको देबे तो सेही समय रे सी निजर कंस्ट्रक्ट आइडियाज करिवे निजर नॉलेज को डेवलप करिवे बुझियला तो एठी लर्नर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कम्स अंडर एक्सप्लोरेशन देन आसला कोन एक्सप्लेनेशन तो ए जो थर्ड फेज रहिला एक्सप्लेनेशन तो ए एक्सप्लेनेशन फेज रे टीचर रे काम कोन कि से एक्सप्लेन करिवो छुआ माने कहि देले तांको बाटे कहि देले तमे जेति कि जहा पारिबो तमे छुआ मानन को टॉपिक टा को एक्सप्लेन करिवो छुआ मानन को बुझेइबा अकॉर्डिंग टू देयर मेथड सब्जेक्ट हिस्ट्री हेले हिस्ट्री टाइप रो बुझेइबो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी साइंस मैथ जो भी टॉपिक होउची तापर एक्सप्लेनेशन फेस्ट होउची टीचर रो से कोन करबा से टाइम रे एक्सप्लेन करबो छुआ माने जो जो आंसर देथिबे समस्त को अप्रिशिएट करि सल्ला परे सेही आंसर टा को ब्रॉडेन करके ताको वाइड करके तांको बुझाइबा को चेष्टा करबो बुझाइले देन आसला कोन फोर्थ फेज एलाबोरेशन ओके जो 5E मॉडल कहूचे तार फोर्थ फेज होउची हमर एलाबोरेशन ये हला फर्स्ट ये हला सेकंड फेज ये हला थर्ड फेज एलाबोरेशन होची फोर्थ फेज तो एलाबोरेशन ने कौन हबा आमे पिलांक सहित संपूर्ण जीस्ट को डिस्कशन करबा आज आमे कौन कौन पढ़िले तमे आज कौन कौन बुझिला ए जिंसटार समरी कौन रहिला तो ए सब जिंस आमे एलाबोरेट फेज रे डिस्कशन करि थाउ एंड हमर जोटा फाइनल फेज बा फिफ्थ फेज रहूची दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन फेज तो ये इवैल्यूएशन फेज रे आमे कौन करथाउ विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आंसर मेथड जेमति मैचिंग द कॉलम माने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वन लाइन वाला क्वेश्चन किछि भी ऑप्शन दे के पिला मानको ऑप्शन भितर करेक्ट आंसर चूज करो एई भली क्वेश्चन दे के पिला मानकर ए गोटे यूनिट बा ए सब टॉपिक रे केते नॉलेज हैला ताकू हमें इवैल्यूएट करिथाउ दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन फेज बा फाइनल फेज ऑफ टीचिंग ओके क्लियर हैला समस्तंकर एटा लिपि क्लियर नेक्स्ट जिबा आशा करूची जति कि पारिथिबी बुझाई पारिथिबी एंड समस्तंकर क्लियर हेइथिबो साइड स्क्रीनशॉट मैम ओके साइड हे गली एबे स्क्रीनशॉट नियो नै सारे कहबो आगु को जिबा थैंक यू मैम मोर आज ऑल क्लियर है ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट ए भितर कोटा रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन ए ट्रेडिशनल लेसन प्लान इज टीचर सेंटर्ड ऑप्शन बी 5E अप्रोच टू लेसन प्लान इज लर्नर सेंटर्ड सी ट्रेडिशनल लेसन प्लान एंश्योर्स लर्निंग डी 5E अप्रोच फॉलोज कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल कोटा हबा पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट आंसर दिया समस्ते पिले ए भितर कोटा रॉन्ग स्टेटमेंट यस ऑप्शन सी ट्रेडिशनल लेसन प्लान एंश्योर्स लर्निंग केबे भी सेटा लर्निंग प्रोसेस को एंश्योर करि पारेनी बा इफेक्टिव लर्निंग बा मीनिंगफुल लर्निंग मेकिंग करिवारे हेल्पफुल हुए नाही नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन ऑप्शन ए student sit silently in the class option b student whisper in the class c students are asked for any questions d students are allowed to talk in the class कोटा हबा बिले which of the following is used for language learning or acquisition very good Lippy next anyone else yes option d that is students are allowed to talk in the class so that semanakara language learning develop hoba परस्पर सहित कथा हे पारिले परस्पर सहित मिसी पारिले डिफरेंट डाइवर्सिटी पीपल मानक सहित इंटरैक्ट हे पारिले नेक्स्ट जिबा
कि which of the following is correct statement with reference to NCF 2005? Option A, language evaluation should focus on achievement. B, evaluation has to be an enabling factor for learning. Okay. C, evaluation in language has to be fewer tests. Option D, approaches in evaluation need to be exclusive. कोड हवा बिले it have option B, that is evaluation has to be an enabling factor for learning. Okay, very good Lippy and Lija. Next, why does English play a pivotal role in higher education? Higher education English गोटे main role काहे की play करी थाए? Option A, useful for comprehending reference materials. Option B, useful for research. Option C, used as medium of instruction. Option D, for all of the above. कोड हवा? Yes, obviously option D, that is all of the above. A child can master an extremely rule governed language due to what? Exposure, innate learning ability, constant practice or intelligence. पाग लगे मो गला खराब हो गला ना तम मानक पाखरे अति चिल्लै दे कि मो गला खराब हो गला मु जानि परमे ऑप्शन बी हबो innate mental ability. यस कमला राइट आंसर. मत लगुच मुझे आज बेसी चिल्लै देली आ. नेक्स्ट, व्हाट मेक्स ए चाइल्ड फेस प्रॉब्लम इन लर्निंग ए लैंग्वेज? एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, अननोन लैंग्वेज स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज कंटेक्स्ट, कंपल्सन. कोडा बिले B. Option C, absence of language context of a C. What makes a child face problem in learning a language? Unknown language structure, absence of language context. Absence of language context of पिला माने काहेकि ना सपोज मु कहबी मु एबे वेस्टर्न ओडिसा जाईची एंड ठीक अछि मु स्ट्रक्चर जानिनी किंतु से कंटेक्स्ट सहित जदि मु अक्वेंटेड हेइथिबी ना मु अधा जेमते कि मु एबे बेंगली जाईची वेस्ट बेंगल सेठी मते बेंगल लैंग्वेज आसीनी मु मे भी ता स्ट्रक्चर जानिनी केमिति कोन कहब मु अधा बेंगली अधा ओडिया कहि पार तो हे जिबी मु बिहार जाईची मते हिंदी स्ट्रक्चर जाना नाही किंतु मु टिके टिके हिंदी जानिची मु से कंटेक्स्ट से एनवायरनमेंट विषय जानिची ताले से एनवायरनमेंट सहित अक्वेंटेड होबा पई मते सेटा हेल्पफुल होबो किंतु जदि एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज कंटेक्स्ट थिबो ताले चाइल्ड फेस प्रॉब्लम इन लर्निंग ए लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट बा children develop correct language habits by what? Observation and imitation. B, listening and speaking. C, practice and correction. D, exposure and observation. कोड हवा बिले तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ए चाइल्ड टू एक्वायर फास्ट लैंग्वेज विदाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? एनकरेजिंग एनवायरनमेंट, इनेट टीचिंग लैंग्वेज 1, नो करेक्शन ऑफ एरर्स और रिवर्स. पिले ए सब इंग्लिश रो आसी जाउ आई थिंक हमको एटी क्लास स्टॉप करियर अछि. सॉरी फॉर इंग्लिश पेडागोजी कहीं ना ये सब पिला थिबे तो ये आम आज क्लास को स्टॉप करवा. एंड येस जो मैंने चाहूच आम सहित कनेक्ट होकर आग को जावाई तुमको अपर टेलीग्राम लिंक दि जाइए सहित तुम्हें विद्याकर ऑफिशियल नंबर रे कांटेक्ट करके पिला माने तुम्हें आम चैनल सहित जोड़ी हो पार. एबे SSB TGT बाहर जूनियर टीचर हो कि किसी भी जो प्रिपेरेसन कर मैंने जॉइन हो पार. एमती तो आम सप्ताह को गोटे थर लेखा आसिक देखा हो जो मैंने जॉइन हो भी नो प्रॉब्लम. तो आमे क्लासेस करिबा देखा हवा निश्चित डिस्कशन करिबा. एंड यस गोटे एडवाइस देबी क्लास को जेते बेले आसुच डाउट सहित ही आस सो दैट तमे मते पचारिले ही मु आउरी इफेक्टिवली पढ़ाई पारिबी. जेते डाउट नै के आसीबो सेते बेटरली मु प्रिपेयर हे के आसीबी केते बेटर तुमको पढ़ाई पारिबी. नले घसा पिटा टीचर भलिया घसी घसी क्लास पळेइबो. मु सेमती पढ़ाई देबी तमे सेमती बुझी बुझी पळेइबा. आमे केही भी
किछि भी कहार भी इम्प्रूवमेंट हो पारबनी जदि आम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पढ़ुचे जदि सीसी पढ़ुच फीडबैक फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट मु भी मो स्टूडेंट मान ठारू फीडबैक चाहूँगी ओके तो फीडबैक पाइले ही मु मोर इम्प्रूवमेंट करी थैंक यू रीतांजलि लिपि तो थैंक यू एवरीवन क्लास को एटी एंड करबा देखा नेक्स्ट क्लास रे with more question answer or conceptual classes okay ठीक अच्छे टाटा बाय बाय।